First of all, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss the Indian geography, and the first lecture of the Indian geography is about the physical features of India. In this lecture, we are going to discuss what is the location of India, and thereafter, different features. We are going to discuss mountain, hills, plateaus, plains, drainage system, as well as the coastal boundaries, and including islands. This is what the physical geography. We can say the physical features of India. That is under physical geography. First, we will study the basics of India. What is the basic of India? Means how globally it is located. Basics of India means east-west extent of mainland of India, including Pakistan occupied Kashmir. That it start from this point, which is 68 degree 7 minute east to 97 degree 25 minute east. Okay, 25 minute east. South to north extent of the mainland of India, that is from here to somewhat here. Clear? It start from 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north. ठीक है guys? So this is the longitudinal and latitudinal extent of India. Now, the southernmost point of the country is Pygmalion Point. Pygmalion Point. Southernmost point. This is here somewhat, including Andaman and Nicobar Island, slightly below the land. As we discuss here that it starts from 8 degree 4 minute north. But as far as the Andaman and Nicobar Islands are concerned, the southernmost point, that is Pygmalion Point, and it is located 6 degree 45 minute north. Is it? North to south extend from Indrakul, that is in Kashmir, to Kanyakumari, that is this extent. This extent is how much? That is 3,214 kilometer. And east-west width from the Rann of Kutch to the Arunachal Pradesh. Rann of Kutch, that is in Gujarat, here, and to Arunachal Pradesh, this extent is 2,933 kilometer. Okay. With an area, what is the total area of India? With an area 32 lakh 87,263 square kilometer. Clear? It is the 7th largest country in the world as far as area is concerned. 7th largest country in the world. That's mean the first is Russia, second Canada, then USA, then China, then Brazil, then Australia, and then India. Okay. After India, the 8th number is Argentina, and then Kazakhstan. ठीक है, तो हमने ये इंडिया का ऑर्डर देखा. 7th largest country in the world. India is 7th largest country in the world. Clear? How much area it contribute? It contribute 2.4% of total surface area. 2.4% of total surface area. Clear? Another importance of longitudinal importance, there is another important longitude that crosses India. That is 82 degree and 30 minute east. 82 degree and 30 minute east, somewhat here. Clear? This. And this longitude is considered to be what? Standard time. Standard time. Means we can say IST, Indian Standard Time. That is 82 degree 30 minute east. Okay? Which is passing across the countries, across the different states of India. What are the states through which the IST passes? IST passes through Uttar Pradesh, Madhya Pradesh,
Andhra Pradesh. Okay, and this IST signifies what? This is the standard time of India, which is ahead of GMT, that is plus 5 hour 30 minute. क्लियर? ठीक है, जीरो मेरिडियन से 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट है ये. ठीक है, तो बेसिक्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में हमने ये चीज़ें देखी हैं कि बेसिक्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी में जब हमने देखा कि 1 डिग्री रिप्रेजेंट्स हाउ मनी मिनट्स. ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन कैलकुलेट that India is how much times that is at least. And there is also difference of western and easternmost point, that is difference as 2 hour. 2 hours का approximately 2 घंटे का डिफरेंस आता है. सनराइजिंग स्टेट ऑफ इंडिया दैट इज अरुणाचल प्रदेश. ठीक है, इंडिया की धरती पे सबसे पहले सूरज अरुणाचल प्रदेश में चढ़ता है. ठीक है, एंड अकॉर्डिंगली वी कैन से दैट 1 डिग्री जो होता है वो 4 मिनट को रिप्रेजेंट करता है. एंड देयर इज अ डिफरेंस ऑफ हाउ मेनी मिनट्स, दैट इज नियर अबाउट 30 डिग्री का डिफरेंस है, मल्टीप्लाई बाई 4 करोगे 120 मिनट्स, एंड अप्रॉक्सीमेटली मैंने बोल दिया 2 आवर्स का डिफरेंस आता है. क्लियर? Another important latitude passes through this. Let's hear this latitude just below the 24 degree. I will zoom it first. Okay, this one, this latitude you see here in dotted form, this one, this is known as Tropic of Cancer. Tropic of Cancer. Okay, Tropic of Cancer means 23 degree half minute north, which is passes through the India and divides almost into two equal halves. ठीक है, और ये जो Tropic of Cancer passes through the middle of the country. Clear? Divided India into two different climatic zones, that is temperate and tropical part. The northern part is called temperate part and the southern part is called tropical part. Clear? Okay. Dominance of tropical monsoon climate. ठीक है, being देखो इंडिया divided into two zones, that is temperate and tropical, but still India is considered to be a tropical country. What? Tropical country. Why India is considered to be tropical country? Because of the following reasons. What are those reasons? Let we see. The first reason is dominance of tropical monsoon climate. ठीक है, southwest monsoon, which we will discuss later on in detail. First factor is this. Second factor, Himalaya, which blocks the cold temperate air masses from north, that is Siberian winds. Clear? And the second is agriculture and primary economic activities all are in tropical nature. Clear? That's why because of these three factors, India is considered to be a tropical country. India is considered to be a tropical country. Okay? Politically, India is divided into states and UTs. States and UTs. At present, there are 28 states and 8 UTs because Telangana is the new state which created latest, and a state of UT, a state that is Jammu and Kashmir, that the status of the state is given now Union Territory. Okay, and another Daman and Diu and Dadar and Nagar Haveli. Okay, these are combined. So in last 28 and 8 UTs, 28 state and 8 UTs. Clear is? Okay, because this is a dynamic data, it can be changed. Now we will discuss the India's frontier, boundary, coastal and land boundary. India has approximately 15,106.7 kilometer land border. How much? 15,106.7 kilometer land border, which is running through 16 states and 2 UTs. Land boundary. And coastal boundary, this is land boundary. And we can say land border. Coastline boundary,
7,516.6 kilometer, touching 9 states and 4 UTs. Clear? Now, just look at the map of India. This neighboring countries like China, Pakistan, Afghanistan, Myanmar, Bangladesh, Sri Lanka, Nepal, Bhutan. You will see Nepal here, this, and Bhutan here. Okay. The longest border is with Bangladesh. The longest border is with Bangladesh. This longest border. How much? 4,096.7 kilometer. This is the longest border. Thereafter with China. Thereafter with China. With China, 3,488 kilometer. And then Pakistan, then Nepal, then Myanmar, then Bhutan, and at last Afghanistan, the shortest border. Afghanistan, with Afghanistan, India shares 106 kilometer border. Okay? This is how India is bordering with neighboring countries. Indo-China border. Now, I will give some details about the borders with each country. As far as Indo-China border is concerned, Indo-China border. This is the second longest border of India. Next to Bangladesh, we see already 5 Indian states. Now only 4 because जम्मू एंड कश्मीर को अब हम यूटी कहते हैं. पहले 5 स्टेट्स से शेयर करता था, अब हम कह सकते हैं 4 स्टेट्स. क्लियर? दैट इज हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश. ठीक है? These 4 states share border with China. And one union territory, that is UT of Jammu and Kashmir. Not Jammu and Kashmir, but we can say the Ladakh UT. Clear? Ladakh UT, which is part of the erstwhile state of the Jammu and Kashmir. Which is part of the Jammu and Kashmir. Okay? This border is divided into different sectors. We can say we divided this border into different sectors. That is western sector, middle sector, eastern sector. Clear? As far as the western sector is concerned, look here. If you are able to see properly, I'm zooming the map. Clear? Ladakh. This is area of Ladakh. This. Clear? This UT of Ladakh. Okay? Separate India from Xinjiang province of China. ठीक है? Xinjiang province of China. China claimed that Aksai Chin, Pangong So, ठीक है, area of some northeast Ladakh, ये क्लेम करता है चाइना. तो दिस इज द वेस्टर्न सेक्टर. हम ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, इसमें कुछ फैक्ट्स बताने की कोशिश करूँगा. हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड also shares this western sector. This is the western sector with Indo-China border. Western sector of Indo-China border. Okay. Now come to the middle sector. The middle sector में हमारा ये आ गया. ठीक है. एंड देयर आफ्टर ईस्टर्न सेक्टर हो गया सीधा यहाँ पे आओ. I will show you. This is the eastern sector. ठीक है. ईस्टर्न सेक्टर में देखो आप, यहां पे आपको सिक्किम, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, और फिर कुछ यहां से एरिया आपको मिलेगा. मैकमोहन लाइन भी कहेंगे इसको हम यहाँ पे, है ना. 1140 किलोमीटर लॉन्ग बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना जो है वो रन फ्रॉम ईस्टर्न लिमिट ऑफ भूटान से दीपू पास तक चलती है, विच इज दीपू पास इज कंसिडर टू बी ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया, तिब्बत एंड म्यांमार.
I will show you Dipu Pass. Okay, India, China and Myanmar. प्रॉपरली अगर शो नहीं हो रहा है यहाँ पे, इंडिया चाइना और म्यांमार का जो है वो यहाँ पे है हमारे पास दीपो पास। क्लियर? नो कम टू द इंडिया विद नेपाल। तो इंडिया नेपाल के साथ बॉर्डरिंग जो करता है, कौन कौन सी स्टेट्स हैं हमारी नेपाल और इंडिया की, यहाँ पे नेपाल दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये चीज़, दिस इज नेपाल। आई विल चेंज द कलर फर्स्ट ताकि आपको प्रॉपरली दिखे। ये वाला नेपाल हमारा आ गया, ठीक है। इट शेयर्स द बॉर्डर विथ उत्तराखंड। ओके, ये नेपाल वाला एरिया आ गया। यहाँ पे उत्तराखंड के साथ करता है शेयर बॉर्डर। उत्तर प्रदेश यूपी के साथ, दिस इज उत्तर प्रदेश। क्लियर? देन बिहार, बिहार के साथ करेगा। बिहार के बाद आप देखोगे वेस्ट बंगाल, सिक्किम। वेस्ट बंगाल का भी एरिया कुछ है, इट्स वेरी बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना है। कभी कभार ये काफ़ी क्वेश्चन क्रिटिकल बन जाता है कि भाई नेपाल के साथ कहाँ वेस्ट बंगाल करेगा यहाँ से, लेकिन वेस्ट बंगाल का थोड़ा सा एरिया जो है ना वो इसके साथ नेपाल के साथ टच करेगा। एंड सिक्किम, और सिक्किम भी करता है यहाँ पे, ठीक है, सिक्किम। ये तो आपने देखा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल हो गया हमारा, और देन सिक्किम। ये कुछ स्टेट्स है विच आर शेयरिंग द बॉर्डर विद नेपाल। ओके, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, कम टू इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, दिस पाकिस्तान एरिया, इंडो पाकिस्तान। तो इंडो पाकिस्तान की बात अगर करते हैं, इंडो पाकिस्तान बॉर्डर में 3 स्टेट्स जो हमारे पास है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, एंड 2 यूटीज, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। दे आर शेयरिंग बॉर्डर विद पाकिस्तान। क्लियर? इस बॉर्डर को हमने कुछ डिफरेंट कैटेगरीज में भी डिवाइड किया है, एंड दैट इज वी कैन से इंटरनेशनल बॉर्डर, LOC, ठीक है ना। फिर लाइन ऑफ कंट्रोल आ गया आपका LOC, ठीक है। LOC नॉर्थ, इन द नॉर्थ टू 0 पॉइंट बिटवीन इंडिया स्टेट जो गुजरात है और सिंध प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान के बीच में। POK विद इंडियाज यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के साथ शेयर करती है। और आपको पता है ये डिमार्क किया गया था शिमला एग्रीमेंट में 1972 में। शिमला एग्रीमेंट जब हुआ था, शिमला एग्रीमेंट, देन इट वॉज डिमार्केटेड। क्लियर? नाउ नेक्स्ट टू इंडो बांग्लादेश बॉर्डर। एज पर एज इंडो बांग्लादेश बॉर्डर इज कंसर्न, विच इज द लॉन्गेस्ट बॉर्डर, इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया। It touches the 5 states, that is West Bengal, Assam, this is Bangladesh here. Clear? Sharing the boundary with West Bengal, Assam, Meghalaya, Tripura and Mizoram. Clear? Thereafter Myanmar. Myanmar sharing the border with Arunachal Pradesh, Nagaland, Manipur, Mizoram. Clear? Bhutan with 4th state. Bhutan is here. This is Bhutan. Clear? And sharing border with 4th state, that is Sikkim, West Bengal, Assam and Arunachal Pradesh. So these are the 4 states which are sharing border with this. Clear? Sri Lanka. India and Sri Lanka are separated from each other by a narrow shallow park state. ठीक है? Okay? This is what about the India. Now I will tell you some questions. Depending upon the informations we read yet, we are able to answer those questions. Clear? Question is like this. Along which one of the following meridian? क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपको बताऊंगा, मैं कुछ मेरिडियंस यहाँ पे लिखता हूँ। आई विल मेंशन द मेरिडियन 2 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, सेकंड 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, सी ऑप्शन है 92 डिग्री 30 मिनट वेस्ट, एंड डी 92 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ओके, आपको क्वेश्चन ये है कि इंडिया एक्सपीरियंस करेगा सबसे पहले लाइट, फर्स्ट लाइट ऑफ सनराइज, इनमें से किस लैटिट्यूड, किस लॉन्गिट्यूड पे इंडिया को सबसे पहले लाइट मिलेगी। अब देखो,
सबसे पहले आप वेस्ट वालों को एलिमिनेट कर दोगे, क्योंकि वेस्टर्न में हिंदुस्तान तो है ही नहीं, हिंदुस्तान की लोकेशन तो दीज टू है, ठीक है। ये हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है जो हमने अभी देखा था, IST है। और अगर हम देखेंगे अरुणाचल प्रदेश जो है वो 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट आया था हमारे पास, क्लियर। तो नियर अबाउट आउट ऑफ द गिवन longitude we can see this 92 degree 30 minute east will experience the light first as compared to this one, clear, because sunrise in the east and the sun rising state मैंने आपको बता दिया था, that is अरुणाचल प्रदेश. This is the way how to approach the question, clear. तो ये हमारा क्वेश्चन ऐसे बेस पे आ सकता है, ठीक है। और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हो, क्लियर। और इसकी बेस पे और एक ऐसा इस किस्म का क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा बेसिक फिजिकल ज्योग्राफी का भी इन्फ्लुएंस रहेगा, दैट इज लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को पढ़ना पड़ेगा. आई विल नॉट डिस्कस दोज टाइप ऑफ क्वेश्चन हियर, ठीक है. वी विल सी दीज क्वेश्चन लेटर ऑन व्हेन वी विल स्टडी द लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड. ओके, नाउ we are going to take another questions. हाँ, अब दो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स मैंने आपको बताई. एक लैटिट्यूड इंपॉर्टेंट अगर देखेंगे, जैसे हमारे पास है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये याद रखना है. ये क्या है, 23 डिग्री हाफ मिनट नॉर्थ है, ठीक. और दूसरा है हमारे पास IST वाला, जिसको हम लॉन्गिट्यूड कहेंगे, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट. तो इन ये किस किस स्टेट के थ्रू पास होता है और ये कितनी स्टेट्स के थ्रू पास होता है, ठीक है. ये सबको पता है. दिस इज होमवर्क फॉर यू पीपल, ठीक है. एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस, अगले लेक्चर में हम कुछ हिमालयाज़ की ओरिजिन, हिमालयाज़ का जो है फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, हिमालय कैसे फॉर्म हुआ, और फिर हिमालय माउंटेन्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है. देन नॉर्दर्न प्लेन्स पे आ जाएंगे, फिर प्लेटोज़ पे, फिर पेनिनसुलर प्लेटोज मतलब पेनिनसुलर प्लेटो आ गया हमारा. फिर हम वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्टल बाउंड्रीज को देखेंगे. देन देयर आफ्टर विल सी द आइलैंड्स और ड्रेनेज सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे. इसी तरह से हम फिजिकल फीचर्स ऑफ ज्योग्राफी को इन डिटेल डिस्कस करेंगे, क्लियर. चाहे हमारा कोई भी एग्जाम हो, JKPSC से लेके JKPSC से लेके JKSSB का लेवल, ठीक है ना. सबसे टॉप तो यही लेवल, हम कोशिश करेंगे इस लेवल से पढ़ने की पूरी ज्योग्राफी को, ठीक है. ओके, सी यू सोन इन द नेक्स्ट लेक्चर.